Good morning students and welcome to your science online class. Students, today we will start a very interesting chapter of biology, that is transportation in animals and plants. Here, as the word is also suggesting, that transportation means transport or transfer. But what is transport in animals and plants and why we require transportation, that we will discuss in today's class. So let's talk about the introduction. Students, as we all know that we need food, oxygen and water to survive. Now this is very important that these elements need to be delivered to different body parts so that they can function properly. And for this we must require a transport system in our body, and that is our circulatory system. So now we will begin with the first topic, human circulatory system. As already we have discussed in the previous chapter that human respiratory system plays an important role in our life. In the same way, human circulatory system is a transport system of human body which consists a network that supplies food, water, oxygen and other substances throughout the body. जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक नेटवर्क के जैसे वर्क करता है जो फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है. एंड इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स: ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. एंड ईच ऑफ दीज पार्ट्स हैव देयर ओन फंक्शंस. So let's talk about these one by one. First is blood. Students, blood is present in all the parts of the body. अक्सर जब हमें चोट लगती है तो एक रेड कलर का सब्सटेंस निकलता है, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो. एंड दिस रेड फ्लूइड दैट फ्लोज इन आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ब्लड. सो हमारी बॉडी में एसेंशियल सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ही करता है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी. एंड इट इज ऑल्सो कैरीज द वेस्ट मटीरियल टू किडनी विच देन फिल्टर्स द ब्लड. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, it also provide nutrients to all the parts of the body. Now students, look at this picture. Blood also protect the body from losing blood by forming a clotting on injury. And blood में कुछ ऐसे substances होते हैं जो हमारी body temperature को regulate करने में help करते हैं. Now this blood is also having some parts which are called components of blood, like plasma, red blood cell, white blood cell and platelets. Students, liquid part in blood is called blood plasma, and this help in transportation of nutrients in our body. Next is RBC, or we can say red blood cell. So it is present around 40 to 45% in blood. These are red in color because of the presence of a pigment called hemoglobin, and it carries oxygen. Now वाइट ब्लड सेल जो कि ब्लड में सिर्फ 1% ही प्रेजेंट रहते हैं, ये सेल हमारी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करती है. लास्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स. सो स्टूडेंट, इट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग क्लोटिंग ऑन इंजरी and save our blood from flowing out. So this was all about blood. In our next video, we will discuss about blood vessels.